Hello guys, good morning to all of you. How are you all? I hope you are all well. So today's our the living world chapter has been completed and today we start the cell the unit of life. Let's start. Cell the unit of life. आज हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है? So let's start. Cell is a fundamental structure structural and functional unit of life. This is very important. Fundamental structure and functional unit of the life. What is cell? ठीक है? Then the basic unit of life is cell. In all living organism, cell in all living organism basic unit of the life. ठीक है? Okay. Then cell divides in two categories. First is the single cells. Second is many cells. What we say? Unicellular. I'm sorry. Unicellular. And this is multicellular. It means single cell को क्या कहते हैं? Unicellular. And many cells, what we say? Multicellular. The basic of the life, that is the cell in all living organism, and fundamental structural and functional unit of the life. What is cell? Okay. Then cell, this is the unicellular, and this is multicellular. यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसी, सेकेंड इज performing essential functions of life. This is इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. आई मीन ये अपना खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. और परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, और ये एक ही सेल से अपनी सभी इसेंशियल फंक्शन हैं जो परफॉर्म करता है, ठीक है. कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और मल्टीसेलुलर तो होते ही हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. अब हम आते हैं सेल थ्योरी. सेल
थ्योरी। सेल थ्योरी, two scientists. First is Matthew Sleden. This is the German botanist. This is the German botanist. And Swan ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसने क्या ऑब्जर्व किया था कि ऑल प्लांट, आई एम सॉरी, all plant are composed of different kinds of cells। ठीक है, इस इट मीन्स ऑल प्लांट्स आर द कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स। सभी जो प्लांट्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप की सेल्स से कंपोज होते हैं। ठीक है, और इसका क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। सेल्स इसने आगे भी दिया, सेल्स had a thin outer layer। ठीक है, इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल सेल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर। ओके, देन आगे जो ये स्लीडन था ना, इसने दिया, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसने बोला था ना सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, तो वो क्या थी, वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन अबाउट द प्लांट टिश्यूज, इसने प्लांट टिश्यूज के बारे में बताया। प्लांट टिश्यूज प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। सेल वॉल प्रेजेंट होना एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट्स का। ओके, सेल वॉल। देन हमारे आते हैं रूडोल्फ विर्च्यू 1855। ये इन्होंने कहा सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। इन्होंने दिया एक
hominis cellula, how many cellula? E cellula. How many cellula? E cellula. This is very important. I'm sorry. This is very very important. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने दिया था? रॉडॉल्फ रिच्चो ने. कब? 1855 में. It means new cells arise from a free existing cells. Okay. Then Sleddon, Swan, wait. I will tell you a very important thing. Leeuwenhoek first saw and described a live cell. And Robert Brown discovered the nucleus. Okay, these are very important, so learn this. Then हमारा आगे Sleddon, Swan plus Rudolph रिच्चो. इन्होंने मिलकर एक हाइपोथेसिस दिया. Hypothesis. That is all living organisms are composed of cells and product of cells. Then second था all cells arise from pre-existing cells. Okay. तो स्लीडन, स्वान और रॉडॉल्फ रिच्चो ने मिलकर एक हाइपोथेसिस दी. दैट इज दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स. की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और उसके प्रोडक्ट्स के द्वारा कंपोज होते हैं. और सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग सेल्स, और सभी सेल्स प्री एग्जिटिंग सेल्स के द्वारा राइज होते हैं. ठीक है. तो आ गया समझ में कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल and functional unit of the life. Okay. Cells are the two types. First is the single cell and many cells. Single cell मतलब यूनिसेलुलर और many cells मतलब मल्टीसेलुलर.
और जो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं या और ऑर्गेनिज्म होते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिडेंट्स होते हैं परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। एंड जो फिर देन हमारी सेल थ्योरी प्रपोज की दैट इज दी 1838 एंड 1839 में। 1838 में मैथिलन स्लीडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था, एंड 1839 में स्वान था जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था, ठीक है। और लेविन ने फर्स्ट लाइव सेल देखी थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, ठीक है। और रॉडल्फ रिचो ने उन्होंने भी बताया था कि ओमेनिस सेलुला इट मीन्स कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। ओके, दिस इज दी सो आज तक के लिए इतना ही। आगे हम इससे आगे करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।